मिनट। देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में हम क्या बतलाए थे, एक्स और ए के रेशियो में ड्रोसोफिला का क्रोमोजोमल बैलेंस थ्योरी हमने बतलाया था, जिसको क्या बोला गया था, ब्रिज बैलेंस थ्योरी। ठीक है, तो ब्रिज बैलेंस थ्योरी में क्या बोला गया था, इन ब्रिज बैलेंस थ्योरी द रेशियो ऑफ एक्स ए या ए एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला एज प्रेजेंटेड बाय द ब्रिज, उसको क्या बोला गया, ब्रिज बैलेंस थ्योरी। बट the chromosomal nature, after the work of the bridge, the chromosomal natures were described and what type of genes are responsible for the sexual determination, that is the determination of the development of the male and female, were explained variously by the different workers. Of course, the work is not completed yet. अभी भी आज के डेट में इसका पूरा जो जीन का जो कंपोनेंट्स है जो कि इसको रेगुलेट करे मेल और फीमेल को डिफरेंशिएशन में, वो अभी तक प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल है, मैन से यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस आते हैं, और काफ़ी डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है कि इन मेल, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में होता है कि इन मेल द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स इज नॉट इनिशिएटेड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेल में क्या होता है कि तुरंत सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं शुरू होता है, बट इन ड्रोसोफिला द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इज इनिशिएटेड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड, बहुत महिलाओं का ये आदत होता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराएं कि हमको बेटा होगा कि बेटी होगा, होता है ना, कभी कभी दिमाग में लोग के फितूर जग जाता है। हालांकि इट इज़ नॉट लीगलाइज्ड, ये लीगल नहीं है, आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं एम्ब्रियो के सेक्स को, बट लोग करते हैं, कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है कि नो, यू कम आफ्टर द 3 months, आप 3 महीने के बाद आइए, फिर हम बतला पाएंगे कि लड़की है या लड़का है। वाई? बिकॉज द सेक्स डिफरेंशिएशन इज इनिशिएटेड आफ्टर द 3 month इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में लगभग आपको 10-12 वीक के बाद वो इनिशिएशन शुरू होता है। बट इन ड्रोसोफिला इनिशियली, तो इन द मैन इट इज एसोसिएटेड विद द sexual differentiation is associated at the organ level, at the organ level, यानी organ level पे जब ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होगा तो वहाँ पे वो डिफरेंशिएशन शुरू करता है। वो आपको पढ़ना भी है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन इन मैन, वो भी है आपके सिलेबस में। लेकिन यहाँ पे तो वो ऑर्गन लेवल पे होता है, यहाँ पे क्या होगा, वो सेल लेवल पे। जैसे वो फर्टिलाइज करेगा उसके जो जीनिक एक्टिविटीज हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल। सेकेंड, कि इन ह्यूमन मैन के कंडीशंस में हार्मोन हैज सम इफेक्ट। हार्मोन जो होगा वो इंड्यूसर का काम करता है मेल और फीमेल के डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी जो कंपोनेंट्स है वो इसमें ड्रोसोफिला में इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द Drosophila that any hormonal effect is observed at the sexual differentiation level, वहाँ ये चीज़ नहीं है। थर्ड वन इज द माइक्रोएरी, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोएरी। माइक्रोएरी इज ए टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ द जीन। किसी जीन का जब आप स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के सीक्वेंस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोएरी एनालिसिस। माइक्रोएरी एनालिसिस अब बाद में, अभी नहीं है, बाद में होगा वो कहीं ना कहीं। तो अगर इफ़ यू मैक्रोएरी करते हैं आप ड्रोसोफिला का, तो ऐसा पाया जाता है कि 30% जो इसके जीन हैं वो कॉमनली सभी इसके सेल्स में एक्टिव होंगे। ठीक है, दैट इज द 30% सिमिलरिटीज ये रिप्रेजेंट करता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस फ्रॉम द सेक्सुअल डिफरेंसेस ऑफ मैन इन ड्रोसोफिला। इन एडिशन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको प्रॉपर समझने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन any differentiation is observed, that means some
प्रोटीनस कंपोनेंट्स और इंजाइम्स और रेगुलेटरी फैक्टर्स और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ये जो भी वर्क हो रहा है डिफरेंशिएशन का, वो किससे होगा? या डीएनए से होगा, होगा तो पर्टिकुलरली वो एमआरएनए से। कहाँ से होना है? ऑल द वर्क ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द एमआरएनए। वो डिटरमाइन कहाँ से होगा? नेचर ऑफ एमआरएनए से। देन द प्रोसेस ऑफ द एमआरएनए इज, मतलब नॉट प्रोसेसिंग ऑफ द एमआरएनए इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। जब वहां पे आप जाते हैं तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सिंपली आप अगर पढ़े होइएगा इन योर ग्रेजुएशन लेवल, तो वहां पे देखोगे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। जो एमआरएनए बनेगा डीएनए से, तो पहले उसको हम क्या बोलते हैं? प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए जैसे बनता है तो उसमें 2-3 जो आप पढ़े भी होइएगा कि फर्स्ट एट द 5' एंड, उसके जो 5' एंड होते हैं वहां पे एक कैप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप। टेक्निकली वी यूज द टर्म कैप। कैप इज एक्चुअली द सेबुन मिथाइलेटेड गुएनोडाई। ठीक है, सेबुन मेट जी, दैट इज सेबुन मिथाइलेटेड गुएनोडाई। एंड इसके जो 3' एंड होते हैं वहां पे पॉली ए होता है, ए थोड़ा लंबा सा 30-40 एडिनाइलिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉली ए। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्प्लाइसिंग। वो क्या होता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मीन्स द स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द रिमूवल ऑफ इंट्रॉनिक सीक्वेंस। क्योंकि जो एमआरएनए यूकैरियोट में बनता है, एक्सेप्ट 2 इंटरफेरॉन और हिस्टोन को छोड़कर, उसमें क्या होते हैं? एक्सोनिक सीक्वेंस होते हैं, फिर इंट्रॉनिक होते हैं, फिर एक्सोनिक होते हैं, फिर इंट्रॉनिक होते हैं। दैट मीन्स एक्सॉन इज द ट्रांसलेटिंग पार्ट एंड इंट्रॉन इज द नॉन ट्रांसलेटिंग पार्ट। ये ट्रांसलेटिंग और नॉन ट्रांसलेटिंग पार्ट होता है। तो जो नॉन ट्रांसलेटिंग पार्ट्स होते हैं दे आर स्प्लाइस्ड आउट। वो क्या होता है? बाहर हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड सीक्वेंसेस। उसके स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे और स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे जहां से वो स्प्लाइसिंग को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो एक तो इस लेवल पे, वन हियर, इस लेवल पे उसके आप नेचर को, एमआरएनए के नेचर को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वन, एट द डीएनए लेवल, अगर आप डीएनए लेवल पे देखेंगे तो सपोज द जीन्स आर प्रेजेंट, तो वहां पे जीन होगा, इंट्रॉनिक का होगा, एक्सोनिक का होगा, इंट्रॉनिक का होगा, एक्सोनिक का होगा, देन दे ट्रांसक्राइब, वहां से वो ट्रांसक्राइब होगा, एंड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन दे आर रिमूव्ड, उसके बाद वो रिमूव करता है। एंड इफ एनी टर्मिनेटिंग कोडोन इज प्रेजेंट इन एनी एक्सोनिक पार्ट, अगर कोई टर्मिनेटिंग कोडोन है और रीड में वो क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया, तो वहां पे क्या होगा? उससे आगे वो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बढ़ेगा, बनेगा लेकिन दैट इज नॉट एक्सीडेड फॉरवर्ड, मतलब अप स्ट्रीम की तरफ वो नहीं बढ़ेगा। डाउन स्ट्रीम का तो वो काम करेगा लेकिन अप स्ट्रीम का काम वो नहीं करेगा। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इस सबको आप दिमाग में रखें, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स है, अब यहाँ पे हम इसको अगर ड्रोसोफिला, वी आर concentrated here on the Drosophila, and most important factors is in this way there are a number of transcriptional factors। क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्राइबिंग साइट्स, जो ट्रांसक्राइबिंग साइट्स को क्या करे? रेगुलेट करे, दैट इज द ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर्स। एंड ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर्स आर कॉमनली प्रोटीन्स। ये क्या होता है? कॉमनली प्रोटीन्स बोलिए या उसको पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, छोटे भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस हो सकते हैं। तो देयर आर द ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर्स, यहाँ पे क्या होगा? वो ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर्स होंगे, एंड दीज ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर थोड़ा सा भी आपके पास यूकैरियोटिक जीन के सीक्वेंस का दिमाग में होगा तो वहाँ पर देखो होइएगा कि क्या होगा? प्रोमोटर होगा, आपको रिप्रेसर होगा, इनहेंसर होगा, ये सब होगा, रिप्रेसर सीक्वेंस होगा, ये सब सीक्वेंस होता है डीएनए में, एक सीक्वेंस में होता है। तो ऑल दीज, वो सारे कॉन्सेप्ट को यू मस्ट कीप इन द माइंड। एंड व्हेन वी कम्स ऑन द ड्रोसोफिला, इन द ड्रोसोफिला फर्स्ट हमने क्या बोला कि कॉमनली द ब्रीड रिप्रेजेंटेड दैट द रेशियो किसका?
X, number of X and number of X and A, मतलब ऑटोसोमल सेट, एक ऑटोसोम नहीं, ऑटोसोमल सेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इन द ड्रोसोफिला. ये ब्रिज बोला. एंड इन दिस वे ब्रिज रिप्रेजेंटेड द सेक्सुअल वेरिएंट्स अमंग द ड्रोसोफिला पॉपुलेशन. उसने क्या एक्सप्लेन किया? सेक्सुअल वेरिएंट्स मतलब सुपर मेल, सुपर फीमेल, इंटरसेक्स, नॉर्मल मेल, ट्रिप्लोइड मेल, टेट्राप्लोइड फीमेल, ये सब उसने, सॉरी ट्रिप्लोइड फीमेल, इस सबको उसने क्या किया? एक्सप्लेन किया. एंड व्हेन वी कम्स एट द जीन लेवल, जब हम जीन के लेवल पर आते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट द 1 2 3 4 5 types of genes are present which are responsible for the differentiation of sex in the at the molecular level in the Drosophila. And all these genes have the different functions. इसके क्या है? Different functions हैं. पहला क्या है? जीन ए. जीन ए, it is responsible for the secretion of signal proteins. It is responsible for the signature of secretion of signal proteins. Signals मतलब कि वो एक सिग्नल देगा, तो कहां पे देगा? किसको देगा? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे देगा, डीएनए लेवल पे देगा. और हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि यू मस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक. उसको उसे आप थोड़ा प्राइमरी कॉन्सेप्ट लेके आइए. आप आ गए एमएससी में बट यू हैव नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ इवन द +2 लेवल. भले आप जहां गए हो हमको नहीं मालूम है कौन कोटा गया, कौन लंदन गया, कौन हांगकांग गया, आई डोंट नो. तो ये जो कंपोनेंट है ये सीक्रेट क्या कर रहा है? सिग्नल प्रोटीन्स. सिग्नल प्रोटीन मीन्स दैट प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को जो क्या करे? रेगुलेट करे. दैट इज द सिग्नल प्रोटीन्स. सेकेंड, द सिग्नल प्रोटीन्स एक्टिवेट द जीन आर. सिग्नल प्रोटीन्स होंगे वो एक्चुअली कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगे? किसी ना किसी जीन आर को एक्टिवेट करेगा. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स. मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स, बिकॉज द सिग्नल्स, इफ द सेल्स आर डिफरेंट, अलग अलग सेल्स है, तो उस सेल के जो सरफेस होंगे वहां पे क्या होगा? उसके रिसेप्टर्स होंगे. अगर वो रिसेप्टर नहीं होगा, इफ द रिसेप्टर इज नॉट प्रेजेंट, देन देयर इज नो प्रोसेस फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल मैकेनिज्म. वो इंटरनल मैकेनिज्म को रेगुलेट ही नहीं करने देगा. थर्ड वन, इट एक्टिवेट्स द जीन सी, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स. दैट इज द साइटोप्लाज्मिक. तो ये कहां पे होगा? ये साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होगा. दैट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स. Then it activates the gene T, that is the transcription factors. It is responsible for the synthesis or production of the transcription factors. ये transcriptional factors को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा. Then it activates to the transcriptional factor activate to the gene X, that protein X in a differentiated cell. That is it is responsible for the differentiation of male and female nature or male and female characters. Then it is the complete. That means in the Drosophila, the molecular basis of the sexual differentiation includes a number of genes, and the combined effect of all these genes are responsible for the sexual differentiation. Okay? क्लियर है ये बात में? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चले आगे. The second slide represents the factors associated with the sex differentiation in Drosophila melanogaster. It is necessary, again I am mentioning here, that it is necessary to mention the species level also. Here I am writing the Drosophila melanogaster because the Drosophila is represented by number of species. ये इसके species अलग अलग है. And on the basis of the species, some transcriptional factors may be different. उसके जो transcriptional factors होंगे वो differ कर सकते हैं.
ठीक है, ठीक है। और द बेसिक मैकेनिज्म्स आर सेम, इसके जो बेसिक मैकेनिज्म्स होंगे वो सेम होंगे, बट द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, अभी हम बोल रहे हैं, जस्ट आई एम सेइंग दैट द वर्क्स आर नॉट मैच्योर्ड, ये जो वर्क है एट द मॉलिक्यूलर लेवल, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज नॉट मैच्योर्ड, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। देयर आर ए नंबर ऑफ, तो ड्रोसोफिला पे ही नहीं, फ्लाई पे भी वर्क हो रहा है, जैसे हाउस फ्लाई पे भी वर्क हो रहा है, अदर जो फ्रूट फ्लाई है उस पे भी वर्क हो रहा है। तो डिफरेंट जो इसके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, दे रिप्रेजेंट सम वेरिएशन, ये वेरिएशन रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये जरूरी है, आपके सिलेबस में भी लिखा होगा, ड्रोसोफिला नहीं लिखा होगा, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर लिखा होगा। तो हियर अगर ड्रोसोफिला भी लिखा हो, दैट इज द ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, दैट इज द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद सेक्स डिटरमिनेशन इन द ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। यहाँ पे ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर की बात हो रही है, ठीक है। एंड यू मस्ट आप इसको समझने की कोशिश करें, यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर, बिकॉज इफ यू वांट टू अपीयर इन द नेट, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप नेट में अपीयर हो रहे हैं तो इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं आने का सवाल नहीं है। एंड समटाइम्स द म्यूटेशनल इफेक्ट्स इज आस्क्ड, बोल देगा कि ये ऐसा हो रहा है इन वन जीन, दैट पर्टिकुलर जीन इज म्यूटेटेड, देन व्हाट विल हैपन, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका म्यूटेशनल इफेक्ट क्या होगा, इट विल आस्क। तो ये नहीं समझिएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हियर द जीन्स आर प्रेजेंट, ऑल दीज जीन्स आर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। द थ्री आर फंडामेंटली इंपॉर्टेंट, थ्री आर फंडामेंटली इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल फ्लाइज, ये सभी में मिलेगा टोटल में। फर्स्ट इज द XLX, SLX. It is the sex lethal. It is referred as the sex lethal gene. Sex lethal gene. And the gene, the function of gene is master regulator of female specific TRA and MSLA2. यहाँ पे जो सेक्स लिथल जीन होंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज द मास्टर रेगुलेटर, ये क्या है, मास्टर रेगुलेटर है, एंड इट रेगुलेट्स अगेन द फीमेल स्पेसिफिक TRA जीन, फीमेल स्पेसिफिक TRA जीन एंड MSL2 जीन. MSL2 is not associated with the sexual differentiation, but it is associated with the dosage compensation. इसलिए MSL अभी आज नहीं आएगा, MSL जो होगा that will discuss in the dosage compensation. ये कब डिस्कस होगा, dosage compensation जो आपको पढ़ना है वहां पे ही आएगा. तो here it is sex lethal is responsible for this function, and the protein which is synthesized by the sex lethal gene is responsible for the regulation of splicing. It is responsible for the regulation of splicing. ये splicing को represent करेगा. And one thing is most important and peculiarly observed in the sexual differentiation in the Drosophila, that is the alternative splicing, which we will see today. अभी हम लोग देखेंगे उसको कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है. दैट इज द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इज द मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर डिफरेंशिएशन ऑफ द ड्रोसोफिला इनटू मेल एंड फीमेल. सेकेंड वन इज द ट्रांसफॉर्मर TRA जीन. सेकेंड इज द ट्रांसफॉर्मर और TRA जीन that is responsible for the regulator of female specific DSX. DSX means double sex. It is the final gene. अभी हम बोले कि three are most important. DSX means the double sex. It is the double sex gene. And FRU splicing. FRU is responsible for the development of the sexual characters, secondary sexual characters in the male. In the male Drosophila, and that transformer is responsible for the regulator of female specific DSX and FRU splicing, and it is responsible for the SR splicing factors. It again responsible for the splicing, regulation of the splicing. Third one is the transformer 2 gene. It is also the transformer 2 gene, and it is responsible for the auxiliary regulator of DSX. Auxiliary means it is not as important as the TRA. उतना important नहीं है, but it is the auxiliary because it is responsible for the combining of the TRA
gene and other factors, which is responsible for the splicing, regulation of the splicing, restricted or alternative splicing. Second, next one is the double sex, DSX gene. DSX gene. And it is responsible for the sex-specific transcription regulation of genes. Sex-specific. That means mainly the male and female is determined by the double sex gene. Double sex gene. And all these four, not four but three, sex lethal, SLX, transformer, TRA, and double sex, DSX, are primarily and fundamentally responsible for the differentiation of the Drosophila into male and female. Next one is the fruitless, FRU gene. Fruitless, that is the FRU gene. And just I am saying that FRU gene is responsible for the development of the secondary sexual characters in the male, in the Drosophila. That one is the next one is sisterless A. Sisterless A. It is the primary sex determining signals. Primary, matlab first, initially. That is the sex lethal gene. It has effect on the sex lethal gene. It has effect on the sex lethal gene. That is, it is responsible for the transcriptional factor. It represents the regulated through the transcriptional, synthesize the specific transcriptional factor. That is the polypeptide chain. Sisterless B. Of course, sisterless C is also reported. यहाँ पर हम B लिखे हैं, but C is also reported. Sisterless C, it is also primary sex determining sex signals and associated with the protein is associated to act as the transcriptional factor. Daughterless DA, it is also the primary determining factors, and it is responsible also, its protein product is responsible for the transcriptional factor. And dead palm, DN, dead palm, primary male sex determining factor. Or in other way, if the dead palm is present, it is not responsible for the development of the embryo into female. फीमेल अगर उसके पास है भी तो डेड पाम अगर उसको दे दिया जाए तो वो उसको फीमेल में डेवलप करने नहीं देगा. These are the fundamental genic sequences. ये कैसा है? Fundamental genic sequences है and some transcriptional factors. Of course ये all नहीं है. Some transcriptional factors which are explained properly. जितना को भी properly explain किया जा चुका है. Clear? कोई प्रॉब्लम नहीं? बोल ही नहीं रहे. See here. Here in the female, 2 X chromosomes are present and 2 set of autosomes are present. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. आप तीनों आदमी इधर ही, आप इधर ही. Two X chromosomes are present and 2 autosomal sets are present. And here in male, 1 X and 1 Y and 2 autosomal sets are present in normal condition. And here it is responsible for the synthesis of primary determining sexual factors like SIS-A, SIS-cis-A, cis-B, cis-C, RUNT, DA, all these factors, all these genes. And the productions, the 1 chromosome is responsible for the production of 6 units. Then the 2 chromosomes, 2 X chromosomes are responsible for the production of 12X. If it is responsible for the synthesis of 6X, it is responsible for production of again 6X, that is the
12x. And here the autosomal products, that all are the proteins. These are all the proteins represented 1, 2x. That means it produces the 4x. Clear? Again in male, but in male it represented the only 6x because 1x is not present here. 1x is not present here. यहाँ पे एक x present नहीं है. But the autosomal sets are normal. Autosomal sets क्या है? Normal है. That means it produces the 8 unit, 8x. In the term of 8. X means dosage. X means dosage. Whatsoever, I don't know, but that means the dosage. That is the 8. And that one, the 8 is neutralized by these 8 products. The 8x products of the A are neutralized by the 8A product of X. Then remaining, what remaining? 4. 4 remaining 4x products of the X are remain in the system. But here the 6 are neutralized by all these 6. These 6 are neutralized by all these products of the autosomal products. They are neutralized by the autosomal products. That means the X products are or the primary determining factor, primary sex determining factors of the X are neutralized by the products of the A in the male. There is no remaining. And the remaining components of the X is combined with the maternally contributed proteins. Maternally contributed proteins present in the cell. And when it combines, the X product is combined by the maternally contributed proteins, they activate the SXL gene, sex lethal gene. They activate the sex lethal gene. And after the activation, the sex lethal gene is transcribed. To form active component of product. Active component of product. That means the protein. That is the protein. And here the no remaining X products are present, so the maternally contributed proteins are not combined. ये combine नहीं कर रहा है. So the SXL gene becomes inactive. In this condition, the embryo is moving towards the development of female in this direction and male in this direction. Clear? ये बात clear हुआ? Come here. Here, if you observe the DNA of sex lethal gene, complete DNA of the sex lethal gene, or if you study the sex lethal gene in DNA में अगर हम सेक्स लिथल जीन को स्टडी करें, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द एक्स क्रोमोसोम. ये किससे जुड़ा हुआ है? एक्स क्रोमोसोम से. देन देयर आर 10 एक्सोनिक सीक्वेंसेस. 10 एक्सोनिक सीक्वेंसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 एक्सोनिक सीक्वेंसेस with 2 promoter sites. What is the function of promoter site? आप लोग पढ़िए. I am repeatedly saying that you go through the NCERT book. If you are not in a position to do more study on the different books, you must go through the NCERT book. हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो कुछ होता नहीं है.
वो दिमाग में बैठा हुआ है, बिहार का जो मानसिकता है वो बदलेगा नहीं आप लोग का। बिहारी कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, घुसा हुआ है दिमाग में कि चोरी करेंगे परीक्षा देंगे। Promoter is responsible for the binding of RNA polymerase. RNA polymerase. And by the combining with the RNA polymerase, it is responsible for the initiation of transcription. It is responsible for the initiation of transcription. And here, the promoter sequence is referred as PE, matlab promoter early. PE means the promoter early, and PL means promoter late. That means the promoter sites do early and late part. In early, if PE is in early conditions, it is responsible for the early female SLX protein. Right here, see here, early female SLX protein. Early female SLX protein. Okay? And in this condition, see here the TGA, because it is the DNA. Then TGA, and when it comes in the mRNA, so in which composition it will be changed? That is the UGA. That is the UGA. T is replaced by the U. That is the UGA. UGA is the नॉनसेंस कोडोन। ये क्या होता है? नॉनसेंस कोडोन होता है। सब मुंह देख रहा है मेरा, लग रहा है जैसे नॉनसेंस कोडोन हम पहले बार बोल दिए क्लास में। दिस वन इज द TA, दैट इज द UA, इट इज ऑल्सो द नॉनसेंस कोडोन। हियर द TGA, दैट इज द UGA, इट इज ऑल्सो द नॉनसेंस कोडोन। ओके, दैट मीन्स व्हेन इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड, no doubt, it will be transcribed after the combination with the RNA polymerase with the promoter site. But the protein chain is not synthesized. वो जो protein chain होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, because the terminator codons are present. The terminator codons are present at 3rd, 8th and 10th exonic sequences. Okay? So, here it represents the alternating splicing method. Alternating splicing method. In the early female SLX protein, exon PE1, that is the PE1 from here, this part, PE1, देखिए यहाँ पे, this one. Okay? And 4, this one. That means that this part is spliced out from here to here. This part is spliced out. वो क्या हो जाएगा? स्प्लायोसोम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? जो बाहर निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लायोसोम्स. This site is removed, and now it is responsible for the synthesis of early female SLX proteins. Clear? In second part, late female sex lethal proteins. Here, the PL1, that is the PL1. PL1, this one. This part is spliced out because it is the exonic part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All are the exonic part. And in between the exonic part, intronic part is present. यहाँ पे क्या है? ये इंट्रॉनिक पार्ट है। तो ऐसे भी इंट्रॉनिक पार्ट होगा तो वो क्या है? नॉन ट्रांसलेटिंग है। वो क्या है? नॉन ट्रांसलेटिंग है, वो ट्रांसलेशन में जाएगा ही नहीं। तो ड्यूरिंग द mRNA, इसका जो प्री mRNA बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? तुम लोग का बहुत मुश्किल। क्या करें? अच्छा हटो, ये लेट फीमेल SLX प्रोटीन, ये पार्ट स्प्लाइस आउट हो गया। ये फ्रॉम 3, बिकॉज द TGA इज हियर, दैट इज द टर्मिनेटिंग पार्ट इज हियर, देन दिस वन इज स्प्लाइस्ड, द 3 एक्सॉन इज spliced out. That means it is the exon matured
इन द मेच्योर mRNA, ये तो प्री mRNA बनाएगा, स्प्लाइसिंग कहाँ पे हो रहा है, प्री mRNA में हो रहा है, और अब ये मेच्योर करेगा, वो जाएगा फिर कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस में. तो हियर द 1 2 4 1 1 ये स्प्लाइस हुआ, तो एक्सॉन इज अटैच्ड, and this one is spliced from here to here. That means the 3 and 4 is spliced out. That means 1, 2 and 4 are present. And after the 4, the intronic part is present. That is still present in the 1, 2 and 4. That is not spliced. ये है तो है. Then there is 1, 2 and 4. It is responsible for the late female XL sex lethal protein. ये क्या बनाएगा, लेक्स protein. Third one is this one. This one is spliced out. Okay? This one is spliced out. मतलब a intron between 1 and 2, intron between 2 and 3, intron between 3 and 4 are spliced out. Are spliced out. That means it forms the PL, promoter letter 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. But here in the third exonic sequence, a stop codon is present. A stop codon is present. Why so? There is no protein is synthesized. There is no protein is synthesized. So in male, see here, in the male, SXL gene, sex lethal gene, has not activated to the further differentiation of the sexual characters. Clear? So in the male, the protein is not synthesized, and in this way it is responsible for the development of female character. Female character, male कहाँ? Female character. Clear? And it activates which one? It activates to the TRA gene. अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, सेक्स लीथल का. अब नेक्स्ट कहां पे जाएगा, ये TRA पे. The XLL protein, the product of the XLL gene or the protein synthesized by the sex lethal gene is acts on the TRA gene. Acts on the TRA gene. Next step is the regulation of the TRA gene. Here you see, it is again the alternative splicing in the TRA gene. Again, वहां पे क्या था, 10 था, 10 एक्सोनिक सीक्वेंसेस थे एट द डीएनए. ट्रांसक्राइब कहां से कहां होता था, 1 से 4 तक. फीमेल में क्या था, 1 2 4. मेल में क्या था, 1 2 3 4. अर्ली में क्या था, अर्ली फीमेल में क्या था, प्रमोटर अर्ली 1 and 4. Clear? That the product, that means the product of the late, not early, product of the late promoter. That means the 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 activates to the, comes on the transformer gene. Comes on the transformer gene. And here in the transformer gene, it is the form the pre-mRNA, TRA pre-mRNA. Okay? At the 5' end, at the 3' end. Clear? Here the 2 intronic sequences are present. 2 intronic sequences are present. One is here and another is here. One intronic sequence and another intronic sequence. Clear? Now, in between the intronic sequence, the 2A exon is present, which is divided into 2A and 2B. 2A and 2B. Again, at the 5' end, exon 1 is present, and at the 3' end, exon 3 is present. Clear? Now,
the sex lethal protein is synthesized. Sex lethal protein is synthesized in which embryo? In which embryo? Female embryo. In female embryo. And it regulates the sex lethal protein, removes 2A with spliceosomes. 2A, this part. 2A is from the spliceosome. And here the red line represents the terminating codon. Nature of the terminating codon. Here also the terminating codon is present, which is marked by the red. Okay? And so the XLL protein removes the 2A. This part is removed in association with intron 1 and intron 2. Intron 1 and intron 2. Because intron 1 and intron 2 are removed as the spliceosome. Removed as the spliceosomes. And so the mRNA, the mature mRNA contains 1, 2B and 3. 1, 2B and 3. Clear? In another way, if the sex lethal protein is not present, क्योंकि नहीं है, मेल में नहीं है sex lethal, then it is comes here 1, 2 and 3. That part 2A is not removed. 2A is not removed. And it contains the termination codon. It contains the termination codon. And in the termination, if the termination codon is present, the mRNA without the sex lethal protein is not in a position to synthesize the protein. Okay? That means tRNA protein is not synthesized. That is the non-functional. And if synthesized, that is terminated at here, at a 2A site. That means the protein is non-functional. The protein is not functional. The tRA is non-functional. But in this condition, when the sex lethal protein is present, it is responsible for the functional tRA. Functional tRA protein. Functional tRA protein. And that functional tRA protein is responsible for the further development of the male character. That moves forward. That moves forward. That is move upstream. Come here. Next one is the double sex. Gene, double sex. बोले ना, all these three are. And here, in the double sex splicing, 6 exonic sequences are present. Exon 1, exon 2, exon 3, exon 4, exon 5, exon 6. 6 exonic sequences are present. Clear? And intron is present in between the exon. ये तो पक्का है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं. And now, in the male, हम बार बार बोल रहे हैं कि most important is the alternative splicing. Most important is the alternative splicing. And here, suppose see here, the fourth exon, that means the 5' end of the 4 exon. The 5' end of the 4th exon is a conserving sequence here. That is actually AUAAA. A site conserved AUAAA. That is especially recognized by the tRA protein. Recognized by the tRA protein. tRA means full form transformer. tRA protein and some other transcribing factors also. Some other transcribing factors also. Just I am saying, हम आपको बोल रहे हैं कि it is not matured as yet. अभी भी इसकी जो regulatory mechanisms major genes are described, of course, but the transcriptional factors जो भी होंगे वो अभी भी बहुत सारे होंगे जो कि explain हो सकते हैं. हो सकता है अभी हम आपको पढ़ा रहे हो कोई एक नया रिपोर्ट हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Now in the female,
axon 1, axon 2, axon 5. 1, 2, 3 and 5. 5. 1, this one splice out, this one splice out, this one splice out. 1, 2, 3, 5. Yes, this one splice out. 3, 4 and 5. Okay. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे हमने थोड़ा गलती कर दिया है. 1, 2, 3, 4 and 5. These are the ठीक है. फीमेल में 1, 2, this one 1, 2, 3, no, हाँ 4, yes 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, this one, हाँ 1, 2, 3, 4. These are the splice out, मतलब form the axonic sequences in the female. But in male, the fourth E4 is moved. E4 axon is removed with the spliceosomes. So in male, E1, E2, E3 and E5 are present. E1, E2, E3, okay, and E5 are present. This site is spliced out in the male. This point is spliced out in the male. And here, due to this component, the amino acid synthesized, the polypeptide is synthesized. The amino acid synthesized in the female has 427 amino acids, and in male, it has the 554 amino acids sequences. And in this way, the male and female are developed. Where if you observe the conserving sequences, because here the TRA1, TRA2, both are activate. You see here, the TRA, this one represents the TRA2. This one is the TRA2. The pink colored is the TRA2. TRA2 is associated with both axonic sequences of male and female. Male में भी है और female में भी है. So the TRA2 is present in both sexes. In male, it is responsible for the development of the maturity of gonadal cells. Maturity of the, testicular cells. Maturity of the testicular cells. Of course, the two components, the U2AF35 and U2A65. U2AF65 and U2AF35. Both are the transcribing components. And third one is the SR, serine arginine. SR नहीं है, SA है. That is the SA, not SR. Serine arginine. Arginine component of the proteins. It is the RBP. It is a type of the serine arginine protein group, which is observed in the Drosophila. And all these components, the TRA1 is associated here, and TRA2 is associated with the axonic part of female. TRA2 is here. This one is the TRA1. This one is the TRA2. This is the TRA2. This is the TRA. Only TRA. This one is the RBP. ठीक है? SA protein group. This one is the
UA2F35 and this one is the UA2F65. And here it is also associated. Here it is also associated. And in female, see here, 4, 1, 2, 3, 4. That is the 4 is spliced here. कहाँ पे? Male में. Male में 4, 1 is the splice out. And this 4 is, if it is associated with the exon 4 in the female, it provides the immunity from the excitation. It provides the immunity from the excitation. And when it is provided the immunity, that is the splicing is not observed. And that is non-observance of the splicing. It is developed into the male and female. Clear? कोई दिक्कत नहीं. Third one is the FRU, fruitless. ठीक है? The mechanism of the splicing of the FRU is not observed as yet. What is the proper mechanism of the splicing in the FRU gene is not observed yet. माने ये पूरी तरह से पता नहीं है. But the sequence, if you observe the sequence of the FRU and it is observed in the central nervous system, cell of the central nervous system, and it is mainly responsible for the male behavior, male sexual behavior. Of course, it is not directly responsible for the differentiation of the male and female, but male sexual behavior is determined by the FRU gene, and it is present in the cells of the central nervous system. And if you observe the 5' to 3' sequences, there is the base pairs here. That is the promoter site. That is the promoter site. That is the both promoter site at the 3' and 5' end. Both promoter, 3' and 5'. And that means in the 3' SS, when a single strand, 3' SS and 5' SS. 3' SS and 5' SS. Both alternation are responsible for the splicing nature of the FRU gene. That is the regulated. And here, this sequence, that is the promoter at the 5' end, that is the promoter at the 3' end. Here the male site is present, here the male site is present. The gene responsible for the male characters. The gene responsible for the male characters and male behavior. In between here, this sequence is responsible for the female characters. This sequence is responsible for the female characters. And here, the female character sequences are 159 kilobase. 159 kilobase. Kilobase का मतलब समझ रहे हैं? किलो का मतलब? हाँ, 1000. यस. किलो का मतलब 1000 होता है. तो बेस पेयर मीन्स एक बेस पेयर, 100 बेस पेयर मतलब 100 बेस पेयर, 1 किलो बेस पेयर मतलब व्यू में 1K मतलब व्यू में 1K. ये समझ में आ जाएगा ना? ये तो तुरंत समझ में आ जाएगा. नहीं, यूट्यूब में, फेसबुक में जहाँ आप 1K देखते हैं तो क्या होता है इसका मतलब? वो तो समझ में आ गया ना. वही चीज यहाँ भी है. 1K BP, that means 1000 base pairs. Clear? And here it is the 159 kilo base, and this part is 1352 base pairs. Okay? In between here, the intronic sequences is present. Intronic sequence is present. That is of the 70 kilobase. That is of the 70 kilobase. That means here the two sites are present. That is the 5' and that is the 3'. Both are present, and that is regulated. 5' SS and 3' SS are the regulatory mechanism for the SRU gene at present. जहाँ तक अभी तक जानकारी है, that is 3' SS and 5' SS are regulatory mechanism for the alternative splicing. Alternative splicing. In the female,
or in the male, suppose this one is selected, this part is selected, 5 dash is selected. From that means from this sequence is spliced out. That means 159 kilobase and plus 70 kilobase are spliced out. Okay, that is responsible for the male characteristics, male behaviors. And this one is the female, that is the 70 kilobase, only 70 kilobase is spliced out. That means here the direction from 5 to 3 and here from this one, अगर one sequence 5 to 3 है तो दूसरा क्या होगा 3 to 5 होगा. And that alternation is responsible for the regulation of the alternative splicing in the FRU gene. Clear? और कहीं को किसी को कहीं समस्या है तो बोलिए, हम उसको क्लियर कर दें. That means in Drosophila it is a gene molecularly regulated mechanism for the sexual differentiation, and more or less the same components or same mechanism with some variation are observed in the human beings or in other flies also. इससे बहुत बार कभी हम बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक कोई हाउस फ्लाई पे कर रहा है, कोई हनी बी पे कर रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है. बट द मेजर जो सीक्वेंसेस हैं, जैसे सेक्स लिथल हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, आपको डबल सेक्स हो गया, आपको ये FRU जीन्स हो गए, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन ऑल दिस कंपोनेंट्स. ऑफ कोर्स द अल्टरनेटिव स्प्लैशिंग मैकेनिज्म्स में डिफर फ्रॉम वन मतलब इंसेक्ट्स टू अनदर इंसेक्ट्स. क्लियर? ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़िए लिखिए. नहीं कि नहीं पढ़िएगा? पढ़िएगा ना? ऑफ कर दीजिए, ऋषभ आ जाएगा, डांटेंगे वो भी आ जाएगा. ऑफ कर दीजिए, नहीं तो डांट उठ सुनिएगा तो पूरा दुनिया देख लेगा कि डांट सुन रहे.